Hello class 5. Welcome to Erudite School of Learning. So in our previous class, we were on page number 11 of exercise 2.2 and we have finished off, almost started this 10th question. Okay, simple addition and subtraction just with Hindi format, okay, or Indian numerals. So we're done with this first question. So today we'll start off the second question, and for your convenience, I already copied those all question over here. You can also divide your page into two parts, but work should be neat and clean, okay? Classwork and date of today, the normal formalities as we do in class, and then you have to use your blue pen to write question and answers both, okay? Now, so I hope you all have actually practiced this Indian numerals so that you should know that which digit represents what number, okay? Now, according to English formats, now this is your 7, okay, this is addition sign, so we of course we need to sum up them. Now 7 plus 1 is 8 and we represent 8 like this in Hindi number, okay. Simple addition. 5 plus 6, okay. I have also told you a trick that inverted 3 मतलब 3 का उल्टा ऐसे कर दो तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको 6. So you can also recognize these numbers like this. So 6 plus 5 is 11. 11 का 1 and 1 in carry, and the next one is below it. Now this is your 3. 3 plus 1 4, and 4 when you add in 8, okay, 4 is smaller number, so we'll count smaller number 1 2 3 4 so that we have to count less, and we start counting after the bigger number, which is 8 here. So we start our counting after 8. So after 8 what comes? 9, 10, 11 and 12. So 1 and 2, this is your 12. Now 2 plus 1 is 3 and 3 plus 4 is 7. So our final answer is 7218. Okay. Now third question is again the plus sign. So now this is your 3 and this is your 6. When you add up, you will find that 3 plus 6 is 9. Be careful while making this 9, okay. Draw it, make it properly and correctly, okay. 7 8 9 are somewhat typical to write initially, okay. So practice a lot and then make it right, okay. 6 plus 3 9, again 7 and 2, 7 plus 2 again 9, okay. Now this is your 6 and this is your 8. So which is smaller? 6. So we'll count first of all 1 2 3 4 5 6, and then we start counting after the greater number, which is 8 here. So after 8 what comes? 9 10 11 12 13 14. So the 1 of 14 will go and carry, and this 4 will come below it, okay. Now 8 plus 1 9 and 9 plus 1 10. So we'll write 10. There is no one to give carry on, okay. So the addition and subtraction are as similar, but just what you want to know is how we represent Indian numbers on paper. Now this is your 7 again and this is your 2. 7 plus 2 9, okay. Then 5 plus 1 will be 6. Then 4 plus 8. So just you count the smaller number 1 2 3 4 and then start counting after the bigger number, which is 8. So after 8 9 10 11 12. So 1 of 12 will go here and 2 will come here. And now 3 plus 1 4 and 4 2 ja 8, or 4 plus 4 8. When we add same numbers, we just count the table of how many times it's written, okay. It's both of them will give the same result. So here 3 plus 1 is 4 and 4 plus 4 8, or 4 2 ja 8, okay. Now from fifth question you have subtraction. बच्चों मैंने fifth question यहाँ पे कर रखा है, ठीक है, because it was I just unknowingly added them. So now fifth question यहाँ पर है, ठीक है. तो पहले हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. आपको सीरियल वाइज ही करना है. देयर वाज लिटिल बिट ऑफ मिस्टेक है, सो आई अगेन री रिटन इट. यहाँ से बच्चों आपको माइनस करना है, तो थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है. नंबर्स आपको आइडेंटिफाई होने चाहिए. दिस इज़ योर 8 और दिस इज़ योर 5, ठीक है. तो 8 में से 5 जा सकता है बिकॉज 5 इज़ स्मॉलर. सो विल काउंट आफ्टर स्मॉलर नंबर. कहाँ तक काउंट करते हैं हम? ऊपर वाले नंबर तक इन सब्ट्रैक्शन. सो 5 के बाद क्या आता है? 6 7 8. जिन बच्चों को अभी भी सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है, दे कैन अटेंड बेसिक क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स ऑन एडुडेट चैनल, ठीक है बच्चों. ऑल्दो इट्स एक्सपेक्टेड दैट यू शुड नो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन आपको आता है तो बस आपको माइनस करके सिंपली इंडियन फॉर्मेट में लिखना है. सो हियर 8 minus 5 विल बी 3 एंड वी राइट 3 लाइक दिस इन हिंदी न्यूमरल्स, ठीक है. नाउ 3 में से 6 नहीं जा सकता बिकॉज 3 6 से छोटा है. सो व्हाट वी डू,
विल टेक बोरो फ्रॉम दिस लेफ्ट डिजिट। ये क्या है 6 है, जब ये इसको कैरी देगा तो ये खुद कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये इससे बोरो लेगा तो इसके पास कितना हो जाएगा 5, और ये कितना बन जाएगा 13। सो दिस इज योर 13, ओके। नाउ अब 13 में से हम 6 माइनस कर सकते हैं। सो वी हैव टू काउंट आफ्टर 6 टिल 13। 6 के बाद से काउंट करना है, छोटे वाले के नंबर्स के बाद से काउंट करते हैं हम सब्ट्रैक्शन में। कहाँ तक काउंट करते हैं, ऊपर वाले नंबर तक। सो लेट्स काउंट आफ्टर 6, 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 कहाँ पे आया, यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7। तो दिस मीन्स वी हैव गॉट 7, and in Hindi numerals we make 7 like this, okay. Now here we have 5 and here we have 8. Again 5 में से 8 नहीं जा सकता, so this one have to sacrifice its one, and this 5 will become now 15. ये 5 कितना हो गया 15। आप चाहे तो कैंसिल करके भी लिख सकते हैं, but this question will get disturbed, so I am just, because of less space I am writing directly. So अब हमें काउंटिंग कहाँ से बोलनी है, 8 के बाद से, ठीक है। और कहाँ तक बोलनी है 15 तक। तो 8 के बाद क्या आता है 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। सो नाउ जस्ट वी हैव टू काउंट दिस नंबर ऑफ लाइन्स 1 2 3 4 5 6 7। अगेन वी हैव गॉट 7, सो 15 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 7। और यहाँ पे तो 0 है, तो 0 का 0 आ जाएगा। सो फाइनली आवर आंसर विल बी 773। गॉट इट। Now let's come to sixth question. This is your sixth question. ऊपर क्या है यहाँ पर 4, जो कि 6 से छोटा है. So what this 4 will do? This 4 will ask this 2 to give its 1, and this is very kind too, so it will give its 1. So it will now become, this 2 will become 1, and this 4 will become 14. ठीक है. So now we have to count after 6. 7 8 9 10 11 12 13 14. So how many number of lines? 1 2 3 4 5 6 7 8. And in Hindi numerals we make like 8 like this, okay. Now here it's 1, here also 1, so 1 minus 1 will be 0, so clearly it will become 0, okay. Now again 8 can't be subtracted from 3. 3 में से 8 हम माइनस नहीं कर सकते. So what it will do? It will ask for 1. So this 6 will become now 5, and this 3 will become 13. Okay. Now we have to count after 8. So 9, 10, 11, 12, 13. How much we have got? 1, 2, 3, 4, 5. So 13 minus 8 will be 5, and 5 minus 5 will be 0. So our final answer is here 508. You can also leave some line, guys, if you need to, you think if you are not comfortable in the space what is between these two lines, so you can use more number, but your number should be formed correctly, okay. You can, it should be visible to you, so I'm using much space so that it is, you can get what I'm writing here, but you can use your space, but the number should be correctly represented, okay. Now again 6 can't be subtracted from 2. माइनस का साइन है, माइनस करना है. 6 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकता. So what it will ask from its neighbor digit, that please give me your 1. This 6 will become now 5, and this 2 is now 12. So now we can subtract 6 out of 12. So we'll count after 6, 7 8 9 10 11 12. So what we have got, 12 minus 6 is equals to 6. बच्चों आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे 6 आता है, ये पूरी 3 की टेबल होती है, ओके. सो आई होप यू आर इनफ प्रैक्टिस टू एस्टिमेट दिस. नाउ 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता. अगेन दिस 5 विल सेक्रीफाइस इट्स 1, एंड इट विल नाउ बिकम 4, एंड दिस 5 विल बिकम 15. So we have to count after 8, 9 10 11 12 13 14 15. So how many we have got now? 1 2 3 4 5 6 7. So 15 minus that is equals to 7. This is your 7 in Hindi numerals. 4 में से 4 गया, कितना आया 0, and 3 minus 2 very easy 1. So your final answer is 1076. ठीक है.
नाउ द लास्ट क्वेश्चन, 8th वन। 6 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, ओके। सो what it will do, it will ask to its neighbor digit. So this will become now 7 and this will become 16. So after 7 we have to count 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, which means we have now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So this is your 9, okay. Now again we can't subtract 8 from 7, so what will happen? This 9 will sacrifice its 1 and it will become 8, and this 7 will become 17, okay. So now we can subtract 8 from 17, so we'll count after 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Again we have got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So this is your 9, okay. And 8 minus 0 will be 8 only, so no complications here. And now at last 4 minus 3, which will be 1. So basically it's just a simple addition and subtraction, students. You just know how to form your Hindi numerals, okay, Hindi numbers. So now we're back to our word problem. Now these 8 questions we have solved. Now we will understand again a word problem, okay. Now 11th क्वेश्चन इज शाम बोट एन अलमीरा, ठीक है। अलमीरा क्या होती है बच्चों? अलमारी। शाम ने क्या खरीदी? अलमारी खरीदी। फॉर कितने में खरीदी? 6580। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों किस नंबर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में। इतने रुपए में अलमीरा खरीदी। एंड अ बेड फॉर 2624, और बेड कितने में खरीदा? 2624 में खरीदा। तो बताओ हाउ मच मनी है शाम स्पेंड इन टोटल। तो बताओ शाम ने टोटल कितना पैसा खर्च किया। तो आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए? मैंने आपको बताया टोटल वर्ड जब भी आ जाए मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वी नीड टू सम अप, हमें एडिशन ही करना है। और बहुत सिंपल सी चीज़ है। इतने पैसे में अलमीरा खरीदा, इतने पैसे में बेड खरीदा, तो बताओ टोटल कितना पैसा खर्च हुआ, ठीक है, या कितना हमने स्पेंड किया। सो सबसे पहले हम छोटी सी लैंग्वेज लिखेंगे। टोटल मनी स्पेंड बाय शाम, शाम ने टोटल कितना मनी स्पेंड किया वो हम कैसे निकालने वाले हैं? मनी स्पेंड ऑन अलमीरा, अलमीरा पे कितना पैसा खर्च हुआ, प्लस बेड पर कितना पैसा खर्च हुआ, मनी स्पेंड ऑन बेड। सो वी जस्ट एड बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल कितना पैसा खर्च हुआ। आप बाजार गए, आपने इतने की अलमारी ली, इतने की बेड ली, तो टोटल पे इतना पैसा खर्च हुआ, दोनों को प्लस कर दो, ठीक है बच्चों। आई होप यू शुड नो दिस दैट वी हैव टू ऐड दिस। नाउ again 4 plus 0 will be 4 only, so we'll simply write 4 here, okay. Then 8 plus 2 will be 10, so we'll write 1 over here and 0 over here, ठीक है, because the smaller number is 2, so 1 2 and counting we start in addition after bigger number is 8, so 9 10, okay. So 1 over here and 0 over here. Now 5, this is 5 and this is 1, so 5 plus 1 is 6 and here also we have 6. So जब भी हमको सेम नंबर ऐड करना होता है हम उसी की टेबल बोल देते हैं। यहाँ भी 6 है, इन दोनों को मिला के 6 हो रहा है और ये भी 6 लिखा हुआ है, तो 6 plus 6 करो तो भी 12 आएगा, या फिर सिंपली 6 2 जा 12 कर लो तो भी 12 आएगा। सो in totality we have 6 plus 6 is equals to 12. Got it? Now 6 plus 1 7 and 7 plus 2 9, and this is your 9, okay. So we have to write like this, okay. Unit you should practice to write after number only. So finally we have 9204 rupees. So this means therefore, so okay, this symbol we know it represents therefore total money spent by Sham. शाम ने टोटल कितना मनी स्पेंड किया इज इक्वल्स टू
This is your 9,204 rupees. Answer also you can write, but we are writing language, so it's not necessary that you write answer over here. Okay, so word problems are very easy. It's just your English should be at least fine to understand the question, and your brain, your common sense should allow you to take decision when you have to add and when you have to subtract. So now in our next class we'll finish off this exercise by solving all these 5 questions most probably. Okay, so till then, goodbye all of you. We'll meet in next class and start from 12th question. At least try to read this question and figure out what we have to do. Okay, you should practice by yourself so that your brain can take decisions by yourself. So till then, goodbye all of you.